Good morning, students. Today is our first class of merchant banking and financial services. So, let us start with the meaning of merchant bank. Merchant bank refers to a financial institution that conducts underwriting, loan services, financial advising, and funds raising services for large corporations. Underwriting means if there is an undersubscription of shares, merchant banks can mitigate that risk by buying those shares. So, merchant banks provide underwriting services. Next, loan services. It means loans provide karna to the large corporations in case of any need. Next, financial advising. It means advice provide karna on financial matters to the large corporations. Next, fundraising services. It means funds को raise करना by using the various instruments or various sources of finance. So merchant banks are the financial institutions जो experts हैं, specialists हैं in dealing with the multinational corporations. So merchant banks are the financial institutions and companies जो dealing करेंगे with the international finance for the multinational corporations. But unlike commercial banks, merchant banks do not provide any financial services to the general public. So now next comes the meaning of merchant banking. Merchant banking is a combination of banking and consultancy services. Banking services means it helps the businessman to start the business and helps to raise or to collect the finance. Or consultancy services means to provide the consultancy or advice to its clients for financial, marketing, managerial and legal matters. So merchant banks provide both the services to its clients. First is banking services and next is consultancy services. So merchant banking includes both these services, banking and consultancy services. मर्चेंट बैंकिंग कॉम्बिनेशन है बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का. इट प्रोवाइड्स consultancy to its clients for financial, marketing, managerial and legal matters. Consultancy means advice provide करना, guidance provide करना and service provide करना for a fees. Merchant banks also helps the businessman to start a business. It also helps to raise the finance. It also helps to expand or modernize the business. It also helps in the reconstruction of the business. It also helps to revive the sick business units. It also helps the companies to register, buy or sell the securities at the stock exchange. In India, merchant banking activities की regulation होगी by the SEBI Merchant Bankers Rules 1992. Next is merchant banker. Merchant banker is any person who is indulged in the business of issue management, like वो involve होगा in trading and subscription of securities and as a manager or consultant का role play करना and advisory services provide करना. मर्चेंट बैंकर ने एक्ट किया है एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर. मर्चेंट बैंकर एडवाइस प्रोवाइड करेंगे टू द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन टिल द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. मर्चेंट बैंकर्स इंचार्ज हैं इशू प्रोसेस के एंड वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस एंड मार्केटिंग द इशू. Next comes the definition of merchant banker. As per SEBI rules, a merchant banker refers to any person who is engaged in the business of issue management, either by making arrangements regarding buying, selling or subscribing to securities, or acting as manager, consultant or rendering corporate advisory services in relation to such issue management. Next are the categories of merchant bankers. According to the categories, minimum net worth is set for the merchant bankers. For category 1,
1 crore, for category 2 50 lakhs, for category 3 20 lakhs, and for fourth category nil. According to category 1, merchant bankers सभी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करेंगे विच आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ इश्यूज़ लाइक प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, मार्केट सर्वेज कंडक्ट करना, फंड्स रेज करना फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, एडवाइस प्रोवाइड करना ऑन मर्जर्स एंड अमलगमेशंस, लोन सिंडिकेशन मींस लोन सर्विसेज प्रोवाइड करना, वेंचर कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लीज फाइनेंस प्रोवाइड करना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स को मैनेज करना, फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, पोर्टफोलियो को मैनेज करना, सिक यूनिट्स को रिहैबिलिटेट करना। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कैटेगरी, जो मर्चेंट बैंकर्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज एन एडवाइज़र, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडर राइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 3, merchant banker acts as an underwriter, advisor to an issue, and according to fourth category, merchant bankers act only as an advisor or consultant to an issue. Next are the services offered by the merchant banks. Merchant banks offers a range of financial and consultancy services to its customers. First is project counseling. It means advice provide करना to the various corporations regarding the project कि उन्हें कौन से project में invest करनी है money, प्रोजेक्ट की विएबिलिटी चेक करना, फिजिबिलिटी चेक करना। नेक्स्ट, मार्केट सर्वे एंड फोरकास्टिंग करना, मार्केट सर्वेज कंडक्ट करना एंड फोरकास्टिंग करना रिगार्डिंग द फ्यूचर। फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना। नेक्स्ट, फंड्स को रेज़ करना फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, फंड्स को रेज़ करना फ्रॉम द वेरियस न्यू इंस्ट्रूमेंट्स और वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज़ बॉट आउट डील्स. It is a method of offering the securities to the public through underwriters. Next, customer की securities को manage करना. Next, marketing and underwriting of the new issues. Next, merger or acquisition related services provide करना to the large corporations. Next, advisory services provide करना for raising the funds. प्रोजेक्ट की प्रमोशन करना एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इट मीन्स एडवाइस प्रोवाइड करना टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. नेक्स्ट, पोर्टफोलियो सर्विसेज. इट मीन्स क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट को सेफली मैनेज करना एंड एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करना फॉर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. नेक्स्ट इज़ लोन सिंडिकेशन. इट मीन्स सर्विसेज प्रोवाइड करना in raising credit from the bank and financial institution.